Good afternoon. This is Dr. Bhupesh once again. Welcome to a new week that is Monday, and it is like almost first Monday or the first Monday of March month. So I'm just going to take you over to the topic. This is the simple topic we have. It's like not too difficult. So the patient is a 63-year-old truck driver who have arrived in the emergency by ambulance. CT scan showed stroke. He was stabilized at the hospital with medication. So after the stroke, medications were given. He is due to go home today. He is to be treated with long-term warfarin and is required to have regular blood tests. So these are the two major instructions, that he is going to be treated with the medication, that is warfarin, and second, he needs to have regular blood tests. So that is what is the topic. Obviously, if patient is admit, so I will say, how are you feeling now? So I have always told you first line ko likh do. I have always told you first line should always be written, and then you need to ask the patient, what does he know about stroke? So this is going to be a difficult question to be asked. What does he know about stroke? It appears easy, so always write in the exam, because as you know there are no marks for facial gestures. आपकी रिकॉर्डिंग जानी है तो आप सारा टॉपिक नीचे देख के बोल सकते हो. सो जो ये मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, सो व्हाट डू यू नो अबाउट स्ट्रोक. सो अपने क्वेश्चंस पहले तैयार कर दो. आपको 3 मिनट्स मिलेंगे टू प्रिपेयर योर क्वेश्चन. यू विल हैव 3 मिनट्स टू राइट ऑल दीज थिंग्स डाउन. तो कभी भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि हमें लिखना चाहिए या नहीं. लिख दो, हमेशा लिख दो. ऐसे अपने ऊपर ओवर ट्रस्ट मत करो कि हम बोल पाएंगे. ऑफ कोर्स हम बोल पाएंगे, तो लिखने में भी क्या दिक्कत है. इट विल कीप यू सेफ. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रोक? तो उसको कॉजेज ऑफ स्ट्रोक यही बता सकते हो. स्ट्रेस हो सकता है, एंड ऑल्सो मेजरली ड्यू टू क्लॉटिंग फॉर्मेशन. क्लॉट बन जाते हैं बॉडी में, तो क्लॉट इज द मेजर रीजन. तो आपको ऐसे वैसे इफ इट कम्स इन द एग्जाम, तो आपको पेपर में ये भी दिया होगा कि क्लॉटिंग के कारण होता है ऐसे वैसे. तभी हम आपको ऐसी मेडिकेशंस दे रहे हैं जो क्लॉट फॉर्मेशन को रोकती है. इसको एंटी थ्रोम्बोटिक मेडिकेशंस कहते हैं. सो इट प्रिवेंट्स एंड ट्रीट द थ्रोम्बोसिस, और क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है. रीएश्योर द पेशेंट हिज करंट कंडीशन इज स्टेबल. तो आपको रीएश्योर करना स्टेबल है. एम्फेसाइज पेशेंट्स ऑफ द डॉक्टर्स ऑर्डर्स टू हैव रेगुलर ब्लड टेस्ट. तो उसको स्ट्रेस दोबारा करो कि आपको ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किए हैं, विच विल एंश्योर दैट ही इज क्लोजली मॉनिटर्ड in order to prevent another stroke, so that strokes could be avoided in the future. So you have to undergo regular blood test. So आपके points आराम से बन गए. So it is not a difficult topic. Then advise the patient of the preventive measures such as losing weight. तो उसको preventive measure बताओ कि lose weight. तो ऐसे आपको lose weight करना चाहिए. तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जैसे ये फैक्टर आता है तो स्ट्रेस, ओबेसिटी को भी आप फैक्टर बना सकते हो. ओबेसिटी एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये 3 चीजें डाल दो. अब आपके लिए टॉपिक इजी हो गया और काफी बन भी गया. सो नाउ दिस इज योर टॉपिक. अब मैं आपको बोल के दिखाता हूँ. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज भूपेश. आई एम योर चार्ज नर्स फॉर द डे. सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Well, nurse, all right, but I'm really scared. Yesterday I was about to die. I came here via ambulance in an emergency. I really got scared. See, I do understand that you came to the hospital in an emergency condition and you came via ambulance. But don't worry, now your condition is stable as we have given you the medications. So you have started feeling better and your condition is stable. Well, nurse, I do understand, but now I am very worried. Could you please tell me why are you worried? Well, just about this stroke. I do not have any idea about stroke. Don't worry, I will explain you few things about stroke. But don't you have any idea about stroke? Well, no, nurse, I just know I got admitted because of this stroke. All right. So let me tell you, see, stroke is a kind of a problem in which clotting happens, and this clotting can happen anywhere in the body, especially in the heart and maybe in the brain sometimes, and can lead to fatal consequences. But in your case, as you have been stabilized with the medication, now you need to follow few instructions which are very important. So आप topic को change कर सकते हो. So which are very important. So doctor has prescribed you certain medications which help to prevent and also help in the treatment of clot formation. So basically it is known as thrombosis, and the medications are anti-thrombotic medications. That means these medications prevent the formation of any kind of clots. So in future, if you will take these medications regularly, these are known as warfarin. So you have to take warfarin 6 mg per day for the long term, so as to prevent any clotting in your blood. Is that okay with you? Well, yes, nurse, that's fine. I have understood that warfarin is the medication that prevents clot formation. Yes, you have understood it very well. And I would like to say this medication plays a very important role in the prevention of conditions like this.
Also, I would like to reassure you now that your condition is stable and there is nothing to worry. One thing I would like to really emphasize again, that you need to undergo regular blood tests, because these blood tests are very important to understand whether you are having any kind of tendency to have more clot formation, or with the medications, if your body is adapting well to the medications and clot formation is less. So for that, regular blood test is very important, so you should undergo it at regular intervals as told by the doctor. Okay, nurse. And also, these blood tests are very important in order to prevent another stroke as well, because with the help of these blood tests, we can strongly monitor you and closely monitor you. All right, nurse. Okay, I got your point. Also, I would like to tell you that majorly the causes of strokes include sedentary lifestyle and obesity, and also stress can be one of the major factors that lead to this problem. So reducing these three major factors, that is stress, obesity, and sedentary lifestyle, is very important. So I would like to really encourage you that you should lose some weight. As you know that you are comparatively higher in weight than your average peer group. So please understand, losing weight plays a very important role. Also, the physical activities will reduce your stress. For reduction of your stress, you can do yoga and meditation, and also it will help you to reduce your obesity. Also, I would like to encourage you, please do not follow a sedentary lifestyle. It is very important when you are doing something. Suppose if you are going somewhere, if you are climbing, if you are going through a lift, it's better to climb up the stairs rather than using lift. So these are the simple measures that will help you a lot. And along with that, warfarin will play a very important role in the prevention of strokes. So have you understood it? Well, yes, nurse, I have understood. That's great. Also, I'm giving you this leaflet. This leaflet contains all the information and also other causes of the strokes, and also the preventive measures, which are very important to be followed. So I would really encourage you to follow the instructions given in the leaflet. It will help in the prevention of any clothes in the future. Is that okay? Well, yes, nurse. That's great. So I'm leaving now, and this is your leaflet. It also has our number. So when you will be discharged back home, this leaflet will always have our number. So you can contact on this number if there is anything urgent. All right, nurse. Thank you. Okay, then take care. I'm leaving now. So that is how you speak your OET role play. Now I'm going to unmute you and will ask you questions. So आपका फर्स्ट क्वेश्चन था टाइमिंग से रिलेटेड. ऑब्वियसली टाइमिंग हैज बीन रॉन्गली गिवन इन दिस पर्टिकुलर, मतलब आपको डाटा इनफ नहीं दिया हुआ है, इसलिए मेरे को भी थोड़ी सी बोलने में दिक्कत आई. बट स्टिल आई लाइक टू कैरी माई रोल प्ले विद द मोस्ट कॉन्फिडेंट वॉइस आई कैन प्रोड्यूस. मुश्किल तो है ही जब टॉपिक नहीं दिया, लेकिन पेपर में आपको पूरा टॉपिक दिया होगा. अगर पेपर में आएगा तो आपको कॉजेस के ब्रैकेट में दिया होगा ओबेसिटी, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, एंड जब आपको मेथड्स बताए होंगे प्रिवेंटिव, तो वहां पे ये भी दिया होगा कि प्रिवेंटिव मेथड्स में क्या क्या यूज करना है. जैसे कि आपको वॉक करनी चाहिए, 15 मिनट्स की वॉक करनी चाहिए, लिफ्ट नहीं क्लाइम करनी, लिफ्ट की बजाय स्टेयर्स को क्लाइम करना चाहिए. So all these factors would be given. So please don't worry about these things and listen to this recording 5 times, which is very important. Still, if you have any question, you can ask me, please. That's okay to ask any questions, please. Is it okay for everyone? सबको समझ आया? एंड अगेन वो तो ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड व्हेन आई हैव स्पोकन सो फास्ट. मेरे को तो आपको रोल प्ले करके दिखाना होता है, लेकिन आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आपको पता ही है. सो प्लीज लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग 5 टाइम्स एंड ऑब्वियसली यू विल गेट टू नो एवरीथिंग. स्ट्रेस, फिर स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप बोल सकते हो मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्टिविटीज. सो इफ यू विल एंगेज यूर सेल्फ इन फिजिकल एक्टिविटीज, दिस विल फर्दर हेल्प यू. सो टॉक अबाउट दीज थिंग्स. एंड ऑल्सो मैंने आपको कहा है पेन पेपर हमेशा साथ रखो जब भी रिकॉर्डिंग को सुन रहे हो, और इसको साथ साथ लिख के देखो, सो दैट इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू. इज इट ओके? इज इट ओके Yes, फॉर यू? yes, sir. सर अगर रेपिटेशन होती है तो कोई बात मार्क नहीं, डिडक्ट तो नहीं होते? स्पीकिंग में थोड़ी बहुत रेपिटेशन होगी, ऑब्वियसली होगी. जब आपको या तो टॉपिक बढ़ा दिया होगा, इफ टॉपिक इज गिवन, if enough data is given, so we should avoid repetition. But sir, if data is not given, so few things would be repeated. वैसे भी तो जब आप Okay. पेशेंट को समझाते हो अपने हॉस्पिटल में, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रिपीट होती हैं, उसमें कुछ गलत बात नहीं है. पेशेंट रीएश्योर, रीएश्योर तो दोबारा करना ही करना है. रीएश्योर का मतलब यही है कि जब आप पेशेंट को रीएश्योर करोगे तो कुछ चीजें रिपीट होंगी. तो रीएश्योरेंस का मतलब यही है, जो चीज पहले आप एश्योर कर चुके हो उसको रीएश्योर, री का मतलब दोबारा, आप उसको दोबारा एश्योर कर रहे हो. सो ऑब्वियसली इट्स गोना टेक बिट ऑफ एनर्जी, एंड कुछ चीजें तो रिपीट होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को एक बारी में थोड़ी समझ आएगा.
तो थोड़ी बहुत चीज तो बल्कि इसके ओईटी में पॉइंट्स मिलते हैं जब आप कहते हो आई वुड लाइक टू रीअश्योर यू दैट स्ट्रेस कैन बी रिलीव्ड विद दिस एंड दिस थिंग, योगा एंड मेडिटेशन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, टेकिंग मेडिकेशंस ऑन टाइम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. So these things bring more marks because you are making examiner understand everything very nicely. ओके सर, ओके. Okay, यस सर. done.